Good evening to everyone. This is C. Kumar Shah and welcome to the GateMentorAcademy.com. So आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन स्टैटिक फ्लूइड इट्स ऑफ buoyancy एंड फ्लोटेशंस एंड बहुत ही इजी टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं इन buoyancy, एक क्वेश्चन है एंड दैट कुड बी हियर 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या होता है एक्चुअली buoyancy एंड क्या होता है फ्लोटेशन। So before that, if I'll tell you flotation means the body which is floating. It's not submerged. And some of the portion is above the free surface of water. So if I'm talking the floating body, this is the here floating body. Floating body means there must be some buoyancy force. Then only the body will float. So I am assuming that this is the here free surface of water, and the total height of this body is, let's say that it's a capital H, and the depth of immersion in the water is small h. This is the depth of immersion. So there will be a self fluid. Actually we are discussing an static fluid. Static fluid means the fluid is in the no motion. There is no motion. So the forces here, it would be the self weight or gravity force and the pressure force. These two only forces are there. So देखो एक जो self weight होगा and that will act downward, and जो self weight होंगे that will act at CG. And one more point I will indicate here, B. That B is called here buoyancy. That B, it is named as a center of buoyancy. I will tell you that क्या होता है center of buoyancy and क्या होते हैं center of buoyancy force. And the buoyancy force, it will act just vertically upward. So here I will give you that like a sentence first of all. When a body is partially immersed or partially immersed or completely, the net vertical upward force, the net vertical upward force exerted by the fluid on the body, exerted by the fluid on the body is known as buoyancy force. Is known as buoyancy force. And the upward force is equal to, and the upward force is equal to weight of fluid displaced, weight of fluid displaced, and this principle is known as Archimedes principle. Archimedes principle. That net upward force must be equal to the weight of the fluid displaced. So here the net upward force, I am assuming that here FB, that is the center of buoyancy, and the weight of fluid displaced, and that one I am going to do that WFB. So the buoyancy force must be equal to weight of the fluid displaced. So here the buoyancy force is weight of the fluid displaced, and the weight of the fluid displaced must be equal to the weight of the body. Because they are in equilibrium position, means the body weight is acting downward, and that is nothing but it's a gravity force.
body weight is acting downward and the weight of the fluid displaced is known as buoyancy force that is acting upward. So this is actually here buoyancy. You can just equate it here. How to find out the weight of the fluid displaced? So it is given as rho Vg of the fluid displaced must be equal to weight is also given as rho Vg of body. इसको अगर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं तो here rho of fluid, volume of fluid. Volume of the fluid is given as it's a pi, yeah, that is the area into height. Then how much the fluid is displaced through how much height? So it is nothing but h height. It is a h height. So replace it by volume, area into height into g must be equal to rho of body into area into capital height into g, because the body height is capital. Here the a get cancelled, g get cancelled. So I can say that rho f into h must be equal to rho b into capital H. And this density of the fluid is given as, it's given as specific gravity into density of water, and this is also given as a specific gravity into density of water into H. So this two density it will get cancelled. So remember that SF into H must be equal to FB into capital H. और इसको हम लोग टर्म दे सकते हैं H1 into H1 must be equal to H2 into H2. It means the product of specific gravity and the height is constant. And the specific gravity is inversely proportional to height. जैसे जैसे अगर डेप्थ ऑफ इमर्शन बढ़ेगा, इट मीन्स द बॉडी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो डिक्रीज होगा मीन्स वो फील करेगा लाइटर फील करेगा. इट मीन्स ग्रेविटी फोर्स इज मोर ऑन दैट, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है. इट मीन्स जो हाइट बढ़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इट विल डिक्रीज. स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेट होगा इट विल बी लाइक डेंसिटी इट विल डिक्रीज because the specific gravity is decreased. So always remember that the product of specific gravity into height it must be constant. अगर इस टाइप का अगर हम एज्यूम करते हैं, जैसे कि अगर बॉडी को कंप्लीटली इमर्ज कर दिया जाए, अब फ्लोटिंग नहीं है, अब कंप्लीटली इमर्ज, like body is completely immersed, not immersed, it's a submerged. Notation इसका होगा word submerged. So let us consider that free surface of water की ये height h1 है and यहाँ से यहाँ ये height h2 है, correct? And I'm assuming that height of the body is small. Then what is the net force acting on this body? तो हम बोल सकते हैं कि इस पोजीशन पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है. तो इस पोजीशन पे जो फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, because the force, like let's say that F1 on this F1 is equal to pressure into area. देखो प्रेशर कितना होगा, तो इसका रो जी H1 जो कि H1 हाइट पे है और इसका हम सरफेस एरिया कंसीडर कर रहे हैं. सेम वे ये तुम्हारा टॉप सरफेस के लिए फोर्स है. अगर हम बॉटम सरफेस के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं, बताइए कि इस फेस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, प्रेशर फोर्स. इट विल बी प्रेशर इनटू एरिया, बट ये जो प्रेशर होगा रो जी H2 इनटू. तो यहाँ पे हम लोग नेट फोर्स निकाल सकते हैं एंड नेट फोर्स विल बी हियर F2 minus F1, because F2 ज्यादा होगा कंपेयर टू F1 बिकॉज प्रेशर फोर्स. यहाँ से रो जी एरिया को बाहर निकाल दो एंड दिस विल बी हियर H2 minus H1, एंड H2 minus H1 क्या होते हैं, इट्स H height. H2 minus H1 is here actually H height. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा इट्स रो जी इंटू एरिया इंटू एच, एंड दिस इज नथिंग बट रो जी इंटू BFD, बिकॉज हाइट h है, डेप्थ ऑफ सबमर्शन इज h,
एरिया इंटू हाइट क्या होता है? एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. आई विल राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. तो देखो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए एक ही याद रखना, द इम्पोर्टेंट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. द weight of the fluid displaced must be equal to weight of body, and weight of the fluid displaced is known as here buoyancy force. That is Archimedes principle. That's it, nothing else. So here I will give you the one more thing, like if it is given, जैसे कि ये दिया गया है, this is the free surface of water and एक body है, और इस बॉडी को यहाँ पे टाई भी किया हुआ है थ्रू ए वायर, एंड ये बॉडी है तो completely submerged, हाइट h. तो देखो अगर वायर से अगर टाइड किया हुआ यहाँ पे, टाइड किया हुआ, बांधा हुआ, इट मीन्स देयर मस्ट बी अ टेंशन. इसका यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द buoyancy force which is acting upward. वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, buoyancy force is upward. यहाँ पे दो ही फोर्स रहेंगे, हमेशा याद रखना, buoyancy force and the weight of the body. That's it. Where W is a weight of body and FB is a buoyancy force. And buoyancy force कैसे निकालेंगे? It is nothing but weight of fluid displaced. अगर ये फ्लूइड मेरा अगर वाटर है तो डेंसिटी वैरी करेगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी कुछ दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन kg पर मीटर क्यूब, बट जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा इट विल बी द सेम, और इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहे तो यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, बिकॉज हियर buoyancy force which is acting up, I will change the color. यहाँ पे ऊपर की तरफ काम कर रहा है और यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड एक जो टेंशन होगा वो नीचे काम करेगा, बिकॉज हमको फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी का बनाना है. तो हम बोल सकते हैं कि बाय इन इक्विलिब्रियम that FB is acting upward and the rest of that it is acting downward. So FB is equal to W plus T. यहाँ पे कुछ दे दिया रहेगा, लाइक बॉडी का यहाँ पे दे दिया रहेगा डेंसिटी, they will ask you to find out the tension. So here FB is given as rho F G into VFB must be equal to weight of the body is equal to rho B into G into volume of the body will be equal to T. तो यहाँ पे volume of the fluid displaced and the volume दोनों यहाँ पे equal हो जाएंगे, volume of the body and that is equal to B. क्यों? क्योंकि ये completely submerged है. यहाँ पे just you need to simplify them and you can find out the tension. So this is the equation is that one you need to remember that. चलो next हम लोग डिस्कस करते हैं, like there is a questions are there, based on that I will discuss it, but before that I will discuss the metacentric height. Okay, so we will check the question based on concept of Archimedes principle. देखो ये gate question है, these all are the gate questions. I will discuss it. So look at here, this is दिया हुआ है, a metallic body floats at the interface of mercury and water in such a way that 40% of its volume is submerged in mercury. Mercury is here H3 and 60% is in water. So ये जो volume है 60% water में and 40% है तो mercury में. The
find out the density of the body. See, I won't do anything here because the buoyancy force will act upward and the weight of the body it will act downward. क्योंकि ये दोनों buoyancy force है, FB1 ऊपर एक्ट करेगा, इवन FB2 एक्ट करेगा ड्यू टू द mercury and due to the water, and एक CG होगा, CG से एक weight of the body it will act downward. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे in equilibrium that weight of the body must be equal to FB1 plus FB2. The weight of the body is given as rho Vg of body must be equal to FB1. So FB1 हम यहाँ पे assume कर रहे हैं mercury के लिए. Mercury का है 0.4 V. So here rho of Hg because this is for mercury and this is for water. Rho of Hg into volume in the mercury is how much is that? It's a 0.4 V because 40% are not into G must be equal to rho W into 0.6 V into G. And देखो rho of body मुझे find out करना, volume write down as it is G, and rho of Hg is 13,600 into 0.4 into Vg must be equal to 1000 into 0.6 G into G. तो देखो यहाँ पे Vg cancel हो जाएंगे, so the rho B is given as you just multiply this two and this two you multiply into 0.6 and you will get it the density is 6040 kg per meter. So this is the body density. बहुत ही simple है based on the Archimedes principle. Next, look at here. जैसे कि दिया हुआ a cylindrical body of cross-sectional area of A. इसका cross-sectional area दिया हुआ and the height is h. Okay, so the depth of immersion is given here h, and the density rho s is immersed to a depth h in a liquid of density rho. So the liquid density it is given here rho and tied down to the bottom with a string, then find out the tension in the string. तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बॉडी का बनाते हैं तो जो टेंशन का डायरेक्शन होगा हमेशा डाउनवर्ड दिखाते हैं, away from the body. So if this is the body is there, इसका टेंशन नीचे एक्ट करेगा, इवन द वेट आल्सो इट विल एक्ट डाउनवर्ड, बट जो buoyancy फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा. तो हम बोल सकते हैं कि द buoyancy फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी प्लस टेंशन. मुझे टेंशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो चलो buoyancy force is given as rho Vg of the fluid displaced must be equal to rho Vg of body is equal to tension. तो देखो यहाँ पे फ्लूइड का डेंसिटी कितना है rho है एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड विल बी हाउ मच. देखो यहाँ पे h हाइट से सबमर्शन है तो उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जितना हाइट से सबमर्ज होगा. अगर मान लीजिए कि इतना हाइट से सबमर्ज है तो व्हाट एवर द एरिया इनटू द हाइट इट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज लेट्स से दैट इट्स एरिया इनटू h इनटू g मस्ट बी इक्वल टू body weight, body density is rho s into volume is given as area into capital H, क्योंकि टोटल बॉडी का जो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, तो हाइट इज h प्लस 10. तो देखो अगर यहाँ से डेटा अगर दिया हुआ रहता यहाँ से हम आराम से टेंशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. ये ऑप्शन हम लोग के पास रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं दिए हुए हैं, ओनली यू नीड टू फाइंड आउट द टेंशन. तो टेंशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं यू टेक आउट द a एंड g एज अ कॉमन, तो ये रो हो जाएंगे h माइनस रो f इंटू कैपिटल H. दिस कुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे लाइक मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, वी विल डिस्कस दैट. So we will move it to that next meta center.
तो देखो यहाँ पे एक और थिंग है, जैसे कि अगर ये बॉडी है, अगर बॉडी का अगर हाइट है कैपिटल एच एंड डेप्थ ऑफ इमर्शन है स्मॉल एच, इसका 2 पॉइंट होगा। एक जो पॉइंट होगा वेट, जो कहाँ पे एक्ट करेगा, जी पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एक और जो पॉइंट होगा बी, वहां पे फोर्स, बुयांसी फोर्स एक्ट करेगा। देखो यहाँ पे जी कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे बॉडी का, तो कैपिटल एच, बट अगर मुझे सेंटर ऑफ बुयांसी फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ बुयांसी के लिए डेप्थ ऑफ इमर्शन, जितना डूबा हुआ रहेगा इमर्शन डिवाइडेड बाई 2 कर देना। यहाँ पे डेप्थ ऑफ इमर्शन h है, तो हमेशा ये h/2 हो। तो यहाँ से हम लोग bg का वैल्यू निकाल सकते हैं, that it will be equal to bg is equal to g minus c, and it is a capital H/2 minus small h/2. So this is the bg. तो एक g हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड b हुआ सेंटर ऑफ बुयांसी। b से इंडिकेट करते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे जैसे कि एक होता है मेटा सेंटर। क्या होता है एक्चुअली मेटा सेंटर? देखो मेटा सेंटर के लिए एक हम बॉडी एज्यूम कर रहे हैं, ये बॉडी है और इसका ये नॉर्मल एक्सिस ये है, दिस इज एक्चुअली नॉर्मल एक्सिस, एंड एक पॉइंट होगा जी और एक पॉइंट होगा बी। जैसे कि इस नॉर्मल एक्सिस को थोड़ा सा इसको एंगुलर या लिटिल बिट यू जस्ट ट्विस्ट इट, गिव some angle. So after giving some angle, the point about which okay, I will draw the diagram. So if you give us some angle, so the body will try to oscillate. It will try to oscillate like that, to and fro motion. So there will be, जैसे कि let's just consider the body rest at this position. Then the normal axis will act as a inclined axis, और एक जो इसका होगा vertical axis यहाँ पे होगा something. तो देखो जिस पॉइंट पे inclined एक्सिस और नॉर्मल एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं दोनों को, उस पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं मेटा सेंटर। उस पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे एज ए मेटा सेंटर, और यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट इट इज गिवन दैट थीटा। तो एक जो मेटा सेंटर हुआ और यहाँ पे जी हुआ और यहाँ पे बी हुआ। तो बी पे तो बुयांसी फोर्स ऐड करते हैं, दैट इज अपवर्ड, और ग्रेविटी फोर्स ऐड करेंगे डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आ जाता है मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर के लिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे द पॉइंट अबाउट विच बॉडी इज ऑसिलेटिंग आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, after giving an initial displacement is called a meta center. बहुत सिंपल डेफिनेशन हम लोग को याद रखना, it's called a meta center, and the distance between, this is the first point. Next, the distance between G to M, the distance between G to M is known as it's a metacentric height. Is known as it's a metacentric height. तो यहाँ पे देखो I will indicate it here another diagram. ये बॉडी है तो फ्लोटिंग कर रहा है, तो I will indicate the all the 3 points. ये मेरा नॉर्मल एक्सिस है एंड दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो M होगा, ये मेटा सेंटर होगा, एक G पॉइंट होगा और एक B पॉइंट होगा। ये वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ बुयांसी विल एक्ट अपवर्ड।
So here I need to find out here metacentric height. I need to find out here metacentric height. And यहाँ पे always you remember that for design point of view, जैसे कि मुझे stick बनाना है, तो for design point of view, the metacenter या metacentric height for stick should be 1 meter. For merchant stick का जो होना चाहिए it should be 1 meter. और war stick का जो metacentric height होना चाहिए it could be varies to 1 to 1.5 meter. So now we will discuss that. We will try to find out a metacentric. The next important thing is we have to find out the metacentric. That is important. Because अगर हम लोग कोई चिप बनाने जा रहे हैं तो the important is metacentric. So देखो metacentric height बढ़ने से पहले we will discuss the stability of floating body and submerged body. Equilibrium of submerged body. So देखो a completely submerged body will be in a stable equilibrium. जैसे कि ये body है, ये the body, and this body is a completely submerged. तो completely अगर submerged है, it means जो center of buoyancy होगा, it will be above the center of buoyancy will be above the center of gravity. Center of buoyancy is above the center of gravity. Yani the weight is more than the buoyancy. Then the body is in submerged condition. So यहाँ पे देखो submerged condition के लिए just याद रखना यहाँ पे क्या condition actually. That first of all for stability, stable equilibrium, center of buoyancy must be above the center of gravity. Must be above the center of gravity. That is the stable equilibrium. And the next for unstable. Unstable means the center of buoyancy should be below center of gravity. यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे weight है तो less than buoyancy force. यानी buoyancy force is more. It means अगर buoyancy force ज्यादा रहेगा तब center of buoyancy नीचे रहेगा compared to center of gravity. So this is the case for unstable equilibrium. And एक और होता है that is a neutral equilibrium. Neutral means it will be in a static condition. It will be in a static condition. It won't move. When center of buoyancy and center of gravity coincide. तो किस केस में coincide करेंगे? तो जैसे कि अगर बॉडी ऐसे completely है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ buoyancy दोनों एक जगह होगा. अगर फ्री सरफेस ऑफ वाटर से टच कर रहा है तब वो एक जगह हो जाएगा यहाँ पे. So these are the three cases are there and this is for neutral equilibrium. So here is just write on the B must be greater than G, C must be less than G and B is equal to G for neutral equilibrium.
Similarly, equilibrium for floating body. अगर बॉडी यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, देन व्हाट आर द स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम मेजर? तो यहाँ पे देखो, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, देखो when the body is floating and it is in stable equilibrium when the meta center is above the center of gravity. स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी मेटा सेंटर होगा that will be above the center of gravity and meta center पे ही buoyancy force act कर सकते हैं and center of gravity पे the weight. So remember that meta center should be above the center of gravity. And the next important thing is for unstable equilibrium. Unstable equilibrium. When the meta center is below the center of gravity, और वो अनस्टेबल हो जाएगा, जैसे कि अगर ये इंक्लाइंड एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, ये जी हो गया और ये मेटा सेंटर हो गया, ये अनस्टेबिलिटी होगा. इट मीन्स द बॉडी इज मूविंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज नॉट इन स्टैटिक कंडीशन. ये डब्ल्यू हो गया और यहाँ पे बुओयेंसी फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा. सो दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड द थर्ड केस इज फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन और न्यूट्रल पोजीशन. न्यूट्रल पोजीशन कहने का मतलब है जो शिप है तो एक पोजीशन पर आएगा, शिप है तो वन पोजीशन. So the things you need to remember that when the meta center and center of gravity both are lying at one point, meaning they both are coinciding, it means they are in neutral position. तो देखो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान देना कि अगर ये B कंसिडर कर रहे हैं एंड ये भी B है एंड हियर B है, so the things you remember that for stability the condition is Bm must be greater than 0. Bm must be greater than 0. And Bm का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो Bm वैल्यू will be here is equal to okay, Bm is equal to here. Now see Bm, how you find out here? That one you can find out with the help of Gm. Gm is equal to, I can write down Bm minus Bg. It totally depends upon here Gm. Gm is called here metacentric. तो देखो अगर Bm greater than 0 है, इट मीन जो Gm का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा. यहाँ पे जो Gm का वैल्यू होगा वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि Gm इज इक्वल टू Bm माइनस Bg और अनस्टेबल के लिए Bm मस्ट बी लेस देन 0. Bm must be less than 0. It means Gm will be negative and Gm will be negative means जो G होगा तो ऊपर जाएगा और M हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी जो डिफरेंस होगा Gm इट मीन्स M माइनस G. Gm का जो डिफरेंस होगा M माइनस G वो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे जो Bm का जो वैल्यू होगा, Gm का वैल्यू वो 0 हो जाएगा, यानी Bm must be equal to 0. So this is the condition for stability. So I will write down the once again for stability condition के लिए for stable equilibrium. जैसे कि अगर हम ये body consider कर रहे हैं, I will write down in the first step ये meta center, ये G है और ये buoyancy. So for stable equilibrium, the Bm must be greater than Bg. It means
the GM must be positive. And unstable equilibrium के लिए BM must be less than BG. जो GM वैल्यू होगा इट इज BM माइनस BG, ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा. और फॉर न्यूट्रल पोजिशन, द BM मस्ट बी इक्वल टू B. जो GM का वैल्यू होगा वो G हो जाएगा. तो जब भी अगर क्वेश्चन में पूछता है लाइक टू फाइंड आउट द मेटासेंट्रिक हाइट, we have to use this one, and to find out the stability we will use this one here. तो चलो हम लोग यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट फाइंड आउट करने जा रहे हैं. एंड बाय विच मेथड? इट्स द एनालिटिकल मेथड. मेटासेंट्रिक हाइट, it's the analytical method. So metacentric height is given as BM is equal to BM minus BG. और जो BG का वैल्यू होता है it's G minus B. G क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एंड उसको फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज द हाइट डिवाइडेड बाय. एंड इसको बोलते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ buoyancy. It's a small h divided by 2. So the BG we can find out, but the important thing is how to find out the BM. तो चलो यहाँ पे BM find out करने के लिए we have a formula to find out the BM, and that is found by here analytical method, and that is given as IYY divided by volume of the fluid displaced, where IYY na it's I top. So I top is moment of inertia of top surface, क्योंकि जो दिखेगा उसी का फाइंड आउट करना. एंड द VFD इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. देखो अगर हम बॉडी इस टाइप से कंसीडर करते हैं, जैसे कि इस टाइप का बॉडी, इस टाइप से सबमर्ज्ड किया हुआ है, एंड द डेप्थ इट इज गिवन दैट is the free surface of water, and the depth of immersion is D, and here the L is here, length is here, this is the L length, and this is the T is the thickness I am assuming. तो देखो यहाँ पे मुझे I find out करना है, तो I we know that about x axis. अगर ये बॉडी, अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं, top surface means this is here top surface, so it will be, which is the maximum one, that one we will do that. Okay, so look at here, I've assumed that the width, this is the width is there, it's T, and the length I'm assuming that it's a A, and this part I'm able to see that this one. So to find out that here metacentric height, it's a BM minus BG. So I need to find out here I of top. So see, I of top divided by VFD. So I of top means whichever the least one, pick that one. If you got it here in I top, there's a IT and IL. IT means about YY axis, moment of inertia about YY axis, and IL means moment of inertia about x axis, and it is given as BDQ divided by 12, and this is given as BDQ divided by 12. जो भी लिस्ट होगा, that one you need to select it, that is a I top.
Because this moment of inertia, it means the GM value will decrease, and GM as decreases, that is a positive value. You will get it here, and that is for stability equilibrium condition. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा I वैल्यू लेना पड़ेगा. Here the I value will be equal to I is equal to the two things will be about transverse axis. Transverse axis means this one, or longitudinal axis means this one. This is the longitudinal axis. I will take the other color. L is a longitudinal, and this is the transverse axis. And thickness यहाँ पे T दिया है. तो देखो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो IT का वैल्यू होगा अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, इट्स अ dBq डिवाइडेड बाय 12. तो D कितना है इसका, तो D हो जाएगा यहाँ पे T एंड LQ डिवाइडेड बाय 12, और ये जो IL होगा इट्स LTQ डिवाइडेड बाय 12. जो भी मिनिमम होगा दैट वन यू नीड टू अज्यूम दैट. तो अगर यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स से दैट द थिकनेस इज मोर देन लेंथ, तो थिकनेस इज मोर देन लेंथ, इट मीन कौन सा मिनिमम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये TQ है. TQ मीन्स ये मैक्सिमम होगा. तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ये वाला, so it will be a IT divided by GF, जो भी मिनिमम है. So from there you can find out the GM is equal to IT divided by VFD minus B. And to find out the VFD, I'll use it here, rho Vg of the fluid element displacement. अगर वही अगर सिलेंडर को अगर फ्लोटिंग हो रहा है, जैसे कि हाफ पार्ट है, ये सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर एंड दिस हाफ पार्ट इज अ फ्लोट, तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे. So here you need to assume that let's say that R is here radius and the length I'm assuming that L. तो इस केस में जब अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये जो मेरा जो बनेगा शेप वो मेरा रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा. करेक्ट है ना, रेक्टेंगल टाइप का रेक्टेंगल ही दिखेगा. बिकॉज टॉप से अगर हम सर्कुलर बॉडी को देख रहे हैं, लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी को देख रहे हैं, तो इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल. लेंथ L है एंड द रेडियस इज R. इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट इज BDQ डिवाइडेड बाय 12. इट इज नथिंग बट R into LQ divided by 12. BDQ divided by 12. So I will take it here, that one. That is your I top. So similarly, these are the conditions to find out the moment of inertia. The next important thing is how this metacentric height is used for time period of oscillation also. And the time period for oscillation is given as for more stable equilibrium, GM should be large. So the time period of oscillation is given as 2 pi kV square divided by G into G, where kg is the radius of gyration, I is area into kV whole square, and the kg is root under I by A. So here, if the metacentric height is increases, the time period of oscillation decreases. यानी oscillation का जो टाइमिंग होगा वो डिक्रीज होगा, यानी ज्यादा वो oscillate नहीं करेगा. It will be in the equilibrium condition. So that's why the GM value must be large, because the time period of oscillation decreases. It means अगर वो steep है तो अगर oscillate कर रहा है वो decrease हो जाएगा. So that is the thing you need to keep it in mind. And in the next class we will discuss the problem based on that. So today I'll keep this much only, and please revise it everyone. Thank you.